When we stand in 21st century, we need to identify even more with the educational philosophy of Dr. B.R. Ambedkar, which is rooted in lots of struggle, sacrifice and excellence. If we look back, we find that Dr. Ambedkar acquired the highest qualification, not for his self-enhancement, but to bring about a positive and everlasting change in the history of humanity, and particularly for the downtrodden people. To an artist, a plain canvas and his art tools are his greatest assets. Given what he needs, the masterpiece that is in his imagination can be made to come alive. In the same way, every child needs the right tools to draw, sketch, or paint masterpieces with their lives. And that tool, without a doubt, is education. Given access to quality education, a child can begin to attain his or her true potential, impacting not only their generation, but also many other generations to come. Like Dr. Bhimrao Ambedkar, the man who not only gave India its constitution, but also actively facilitated, promoted, and advocated education for all, irrespective of their caste, class, gender, ethnicity, or other barriers. डॉक्टर अंबेडकर का जो जीवन है वो केवल एक सामान्य जीवन नहीं है और वो केवल एक व्यक्ति का जीवन नहीं है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा, मैं कह सकता हूँ, एक संस्था, अपने आप में कोई इंस्टीट्यूशन है, और इंस्टीट्यूशन कई तरह का इंस्टीट्यूशन है, और अपने आप में एक बहुत एक दुनिया को बदलने की प्रेरणा देने वाले एक महापुरुष का जीवन है। और महापुरुषों का जीवन आसानी से बनता नहीं है, और कम से कम बाबा साहेब अंबेडकर जैसे व्यक्ति का जीवन आसानी से नहीं बनता। बाबा साहब ने जो 3 मंत्र दिए हैं, एजुकेट, ऑर्गेनाइज एंड स्ट्रगल, उनमें पहला मंत्र है शिक्षा है, एजुकेट। एजुकेट का मतलब है शिक्षित होना भी और दूसरों को शिक्षित करना भी। शिक्षा के बारे में बाबा साहब सबसे अधिक महत्व देते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण जो मुझे लगता है, भारतीय सभ्यता जो है, इंडियन सिविलाइजेशन जो है, वो एक ज्ञान की सभ्यता रही है। और किस कारणों से भारत का ये वंचित समाज इस ज्ञान की धारा से वंचित हो गया, इसके कारण तो अनेक हो सकते हैं, लेकिन बाबा साहब पहले सामाजिक और राजनीतिक चिंतक हैं जिसने भारतीय समाज की इस कमज़ोरी को समझा कि आखिर भारतीय समाज में जो ये इतना बड़ा सामाजिक जो एक गैप है, इस गैप को फाड़ने का सबसे बड़ा और शांतिपूर्ण तरीका है शिक्षित होना। शिक्षा के माध्यम से इस भारतीय समाज को संगठित भी किया जा सकता है, इसको शिक्षित भी किया जा सकता है, इसमें बराबरी भी दी जा सकती है। तो बाबा साहब का जो ओवरऑल मिशन है, उसमें शिक्षा का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। Baba Saheb Ambedkar tried to solve the most fundamental conundrum of contemporary life, and perhaps this is the central theme of his educational philosophy, which also lied in the 3 principles called liberty, equality and fraternity. Dr. Ambedkar always, inspired millions of masses to learn, to educate. And therefore, in today's scenario, we see his magnanimous statues across the globe stand for his power, his magnanimous learning, his diverse knowledge, and stand for his remarkable journey of education. As a person teaching law and legal jurisprudence, I understand that the idea of cultivation of mind as promoted by Dr. B.R. Ambedkar as the primary goal of one's life is highly significant. His entire educational philosophy revolves around this only.
He is the original philosopher of education, and education is the primary instrument of social change, according to him. Education, according to Dr. Ambedkar, is therefore not just about the development of the self, but the whole. It is not merely gaining information and knowledge, but it must lead to understanding and wisdom. Education, according to him, must encourage rational and also critical thinking, while at the same time allowing creativity to soar. Every child begins drawing their dreams on the canvas of their life with equal enthusiasm and hope. Yet, some dreams are cut short even before it can begin to take shape. Opportunities are not available to many of them. The colors of their dreams are snatched away due to gender bias, social discrimination, regional disparities, poverty, digital divide, and whatnot. Education is a struggle. It's a struggle for all of the subalterns in society. For Ambedkar, it was also a struggle. He had to, in those days, Dalit children could get into some schools, but very often they had to sit apart. Very often they had to, and still have to in many areas, do the dirty work of the schools. But he persevered. उसके बाद उनके पास आ गए एक अंधेरा था कि मैं कैसे पढ़ूं, पैसा नहीं है, साधन नहीं है, सुविधाएं नहीं है, कुछ नहीं है। तो उनको किसी तरह से उनको जो स्कॉलरशिप मिली, और स्कॉलरशिप मिलकर के जब वो बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, वहाँ से उनके जीवन में एक दिशा आती है, एक बदलाव वहाँ से आता है। क्योंकि यहाँ रहते हुए उनके लिए पढ़ना संभव नहीं था, तो इसलिए बाहर गए तो एक अलग तरह का वातावरण, वहाँ उनको अस्पृश्यता का दंश नहीं झेलना पड़ा, वहाँ उनको जातिगत अपमान की पीड़ा नहीं सहनी पड़ी। Dr. B.R. Ambedkar was deeply concerned about these systemic, political, and social barriers that stood in the way. He used every platform he could to minimize these challenges and also offered practical solutions on how to break those barriers. In our discussion on the educational philosophy of Dr. Ambedkar, we are at National Museum of Dr. B.R. Ambedkar at 26 Salipur Road today. And if we look at him as a true public intellectual and as someone who made the most effective use of his educational knowledge to influence the lives of people at the grassroots. And we are able to see clearly, like Ambedkar kind of exercised all his educational ability for a larger social change. यहाँ पे आप देखेंगे स्मारक में 5 जोन है और 27 एग्जीबिशन है जो पूरे बाबा साहब की पूरी लाइफ जर्नी को बताया गया है इस जगह। आए हम दिखाते हैं बाबा साहब की लाइफ जर्नी के बारे में आगे। अब ये देखेंगे जिसमें बाबा साहब के चाइल्डहुड के उस टाइम के स्कूल के दौरान का सीन दिखाया गया है। इसमें फर्स्ट टाइम जो एडमिशन बाबा साहब का होता है ये 17 में होता है, 1900 में। बट जब दाखिला होता है तो इनके लिए नियम बना देते हैं, क्योंकि वंचित समुदाय के होते हैं, तो इनके लिए 3 नियम बना देते हैं कि तुम पानी जब तक नहीं पी पाओगे जब तक चपरासी नहीं आएगा, और तुम जब भी क्लास में एंट्री लोगे तो नीचे बैठ के पढ़ोगे, और थर्ड तुम्हें संस्कृत पढ़ने को नहीं दिया जाएगा। फिर भी बाबा साहब ने 1907 में जब 10th क्लास कंप्लीट की, अच्छे डिवीज़न से कंप्लीट किया, जो बाबा साहब का नाम हो गया उस जगह 17। डॉक्टर अंबेडकर नेशनल मेमोरियल में जो विजिटर्स आते हैं वो काफ़ी प्रभावित होके जाते हैं। प्रभावित होने के बाद में वो अपना योगदान समाज में देना चाहते हैं। Memorials like these are truly worthy of the man that Dr. Ambedkar was. Yet, beyond these physical structures, thorough examinations of his ideas on education and right implementation of these ideas can be worth even more.
Education is a weapon of mental and educational development, weapon of eradication of social slavery, of economic development, of political freedom, unquote. By these words, Dr. Ambedkar wanted to convey that education does not only mean to read and write, but it also means to eradicate the social evils of our society and to establish the social inclusivity in our society. And that is what the overall message of Baba Saheb Ambedkar is. दलितों, वंचितों, इनके अलावा महिलाओं को भी शिक्षा में स्थान मिले, उनको बराबरी मिले, इसके लिए भी बाबा साहब ने जीवन भर इसके लिए आवाज़ उठाते रहे। बाबा साहब ने खुद जब वो इंग्लैंड में अपनी पढ़ाई कर रहे थे, उस समय वो अपनी पत्नी को पत्र लिखते हैं कि भाई आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, बच्चों की पढ़ाई कैसी चल रही है, और अगर ये शिक्षा के रास्ते में पैसा कहीं आए तो अपने अलंकार बेच के भी पढ़ाई को जारी रखो। इससे पता लगता है कि वो शिक्षा को और ख़ासकर महिलाओं की शिक्षा को कितना महत्व देते थे। आप यहाँ देखेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को बाबा साहेब नाम कैसे पड़ा। जब इनकी वाइफ की डेथ हो जाती है 27 मई 1935 को माल न्यूट्रिशन के कारण, ये अपने फर्स्ट वाइफ से बहुत प्रेम करते थे। उस टाइम महिलाओं को जैसे पढ़ाया नहीं जाता, बट इन्होंने बचपन से ही अपनी वाइफ को पढ़ाना स्टार्ट किया, क्योंकि इनकी बाल उम्र में ही इनकी शादी हो गई थी। तो जब डेथ हो जाती है तो 6 मंथ तक ये घर में ही रुकते हैं। जब बाहर निकलते हैं तो इस बेस में निकलते हैं जो आप सामने देख रहे हैं। जब इनके फॉलोअर्स देखते हैं तो इन्हें बाबा बाबा कहने लग जाते हैं, और महाराष्ट्र में जैसे पति को साहिब बोला जाता है, तो बाबा साहिब नाम ऐसे पड़ता है बाबा साहिब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का। I would identify Dr. Ambedkar as the primary figure as far as women education is concerned. When we look at the women today achieving immeasurable height, one is reminded of Dr. Ambedkar saying that growth of a nation can only be measured through the progress made by women of the given country. I think women of India owe it to Dr. Ambedkar. Dr. B.R. Ambedkar was a man who walked the talk. While he used every position, every platform, and every means he could to advocate and implement his educational philosophy, he also showed by example the way forward by overcoming his own personal challenges and also enabling others through his different educational initiatives. Dr. B.R. Ambedkar believed that education not only theorizes but also offers practical solutions to real life questions. And to the issues of India's educational system, he offered many practical solutions, such as the idea of collaboration and also the pooling of resources among institutes, the idea of credit transfer. Besides, he also encouraged the spending of public finances in the education sector, while at the same time opposing the commercialization of education. He was a man far ahead of his times and had long envisioned the need for continuous and lifelong learning as well. बाबा साहब ने लेजिस्लेटिव असेंबली में एक सवाल किया कि भाई आप वंचित समाज के बच्चों को जो स्कॉलरशिप देते हो और इस स्कॉलरशिप का उनकी शिक्षा पर कोई सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता, उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि बच्चे जिस वायुमंडल में रहते हैं, जिस वायुमंडल में पलते हैं, वो वायुमंडल शिक्षा के लिए प्रतिकूल है, अनुकूल नहीं है। इसलिए उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि उनके लिए हॉस्टल की व्यवस्था होनी चाहिए। The cultural diversity, educational values, morality, ethos, I think these are the greatest achievements of Indian culture. And this is what Dr. Ambedkar also tried to captain. If you look at his scholarship, he uses very scholarly language, rational language, he cites his sources, he gives long quotations. Ambedkar himself, as a scholar, first of all, he could never be a full-time scholar.
He had to either work or so he was serving in the ministry. He was carrying on his political and social activities, economic activities during the day. Most of his writing took place at night. He never wrote any one full-scale book. There are 17 volumes published by the Maharashtra government, many of them unpublished manuscripts previously. A number of his books were published. He had to most often publish them himself. और यहाँ पे आप जैसे डॉग को देखेंगे, बाबा साहब एनिमल लवर भी थे, क्योंकि बाबा साहब जानवरों से भी बहुत प्रेम करते थे और इसका प्यार से नाम इन्होंने टॉबी रखा था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने अपनी शिक्षा का उपयोग केवल निजी उपलब्धियों के लिए नहीं किया। वो चाहते तो कहीं बड़ा पद उनको मिल सकता था, कहीं चाहते एक बार वो एक कॉलेज के मुंबई में एक प्रिंसिपल भी बने, कुछ दिन प्रोफेसर भी वो रहे। इसके साथ साथ उनका जो मुख्य था कि ये सामाजिक बदलाव कैसे हो, जो मेरे जैसे करोड़ों लोग हैं वो उस जीवन से कैसे उभरें, वो भी मनुष्यता का एहसास के साथ कैसे जी सकें। मैं समझता हूँ उनके पूरा जो शिक्षा है उसमें इसका जो निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं कि उन्होंने अपनी शिक्षा में क्या पाया, तो उसमें ये पाया कि दुनिया में मनुष्यता कैसे जीवित हो, कैसे जीवित रहे। और यहाँ पे कम से कम भारत में कि जो एक बहुत बड़ा कई करोड़ लोग, जो इतना बड़ा समुदाय है कि जिनको मनुष्य की तरह नहीं समझा जाता, नहीं देखा जाता, उनको मनुष्यता का दर्जा कैसे मिले, उनको मनुष्यता का एहसास कैसे हो और कैसे वो मनुष्यता मानवीय गरिमा के साथ वो जी सके। जो डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कहा कि पढ़ो लिखो, एजुकेट, ऑर्गेनाइज, एजिटेट, उसका मतलब था कि उनका दायित्व समाज के प्रति क्या है वो निर्वाह करें। जिस तरह से डॉक्टर अम्बेडकर जी ने खुद उस शिक्षा का निर्वाह कैसे करना है ये बताया और जीवन के अंतिम सांस तक वो इस देश के लिए और इस समाज के लिए, वंचित समाज के लिए अपनी सेवाएं दी, चाहे उनके साथ देश ने दिया या नहीं दिया। यानी कहीं भी उनको रिस्पांस वैसा जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। वो प्रताड़ित होने के बावजूद भी उस ज्ञान का ये समझते रहे कि ये लोगों को इस चीज़ का ज्ञान नहीं है, इसको समझाने की ज़रूरत थी और वो समझाया उन्होंने। तो एजुकेशन का मतलब भी ये होना चाहिए। We must make our political democracy a social democracy as well. Political democracy cannot last unless there lies at the base of it social democracy. What does social democracy mean? It means a way of life which recognizes liberty, equality, and fraternity as the principle of life. This was Dr. Ambedkar, a man who could picture what was to come and laid out foundations to build a nation rooted in strong educational system and also its constitution. The vision that has gone into the making of our constitution is so very central. When we identify ourselves as the world's largest democracy, I think contribution of Dr. Ambedkar is immense. The way he is holding a copy of constitution close to his chest, I think it is through that document only that we could protect, we could create a sense of celebration for the concept of unity in diversity. जो डॉक्टर अम्बेडकर जी ने देश का संविधान लिखा वो कलम से लिखा है। यानी हमारे प्रमुख समाज के कितने भी लोग थे उन्होंने हमें कलम की शिक्षा दी। उसका मतलब है ज्ञान हासिल किया और उस ज्ञान को अपने तक सीमित नहीं रखा, उस ज्ञान को प्रवाह किया पूरे देश के लिए और पूरे विश्व के लिए। और आज दुनिया का सबसे बड़ा और सफल लोकतांत्रिक रूप में है कामयाब देश है तो वो भारत है। और उसका एक कारण है कि वो डॉक्टर अम्बेडकर जी का रचित संविधान है। सो इसलिए ये शिक्षा का मतलब मेरे मायने में ये शिक्षा होनी चाहिए, ना कि शिक्षा का मतलब डिग्री होनी। Ambedkar was deeply inspired by Buddhism. So when we are studying Ambedkar, when we are looking at the idea of his educational philosophy, we can look at how he derives a great deal from the life and from the teachings of Lord Buddha. He made it clear that the ideas that he was propagating in the name of liberty, equality, and fraternity were not an outcome of French Revolution, but he had borrowed it from the life and teachings of Lord Buddha. He was very clear that a life of meditation,
a life of calm thinking is very important in our lives. Buddhism, after all, the Buddha emphasized reason and self-action. Atta Dipa Bhav is one of the most famous things. Be your own lamps. He said, don't follow things, he said, just because I said it, but because you worked it through for yourselves. And this Ambedkar appreciated very much. So this theme is one that runs through his life. He talks about reconstructing society very often. In his last essay, for instance, on Buddha and Karl Marx, he mentions philosophers only theorize, think about the world, theorize about the world. The point is to change the world. And then he makes this central to Buddhism. He has Buddha say, religions only interpret society. The point of the Dhamma is to reconstruct society. In today's fast-changing world, characterized by development in technologies, information and knowledge society, globalizations, and so on, where do we stand today is the question that we need to ask in the light of what Dr. Ambedkar had envisioned education to be or could be. If we look at Ambedkar's educational ideas and compare it with new education policy closely, it is visible with that most of the components of new education policy 2020 are taken out of the Ambedkar's book. For example, cluster-based education, easy entry and exit for learners, development of scientific temper, emphasis on indigenous knowledge, focus on mother tongue, and development of universal temper and universal citizenship is so very significant. Dr. Ambedkar International Center is located in the heart of capital city Delhi. The mandate which was given to this center was to bring in socio-economic transformation by carrying out authoritative research, giving out policy feed to the various departments, organizations of the Government of India. With the aim of fulfilling this vision, Dr. Ambedkar International Center has started giving out fellowship to the doctorals and postdoctorate fellows. We also have a huge library which has got the constitution of almost 98 countries and also more than 10,000 books. So all these efforts and all these academic activities which we have started off at this center will eventually bring us at a remarkable position in the academic world, and I am sure the thoughts and philosophy of Dr. B.R. Ambedkar, which are not in the public domain, will be made available for each one of us to understand, to learn, to understand and imbibe. Our university aims for an inclusive society, and we are trying to reach to all corners of the country, to all sections of the society, including the deprived one. In this endeavor, IGNOU has also tried to introduce fee waiver scheme, and this facility is reaching to all the corners of the country. Under the national education policy, we are trying to develop our courses in such a way so that the culture, the socially deprived people, the skills, the values, how they all are to be integrated in our educational framework, and this may help our learners to get the best possible employment opportunities. Ambedkar ji is not with us today, but his ideas, his philosophy, they are with us, they are still relevant, and maybe in the 21st century, our young generation, they will follow, and we Indira Gandhi National Open University feels that the ideas, they need to be propagated amongst all of us, amongst all the citizens of the country. It also promotes equality, it also promotes equity, it also promotes quality, and the reaching to all, that is our motto, and thereby we reaching to the unreached
to whom no one has attempted to reach, now we all are trying to reach. Lovingly remembered as Baba Saheb or respected father, Dr. B.R. Ambedkar's educational philosophy is all the more relevant in 21st century. We hope to continue with his vision to illuminate the life of every child through education and enabling them to achieve their truest potential. उनका ड्रीम ये था कि जो भी सारे बच्चे हैं वो स्कूल जाएं और अपनी शिक्षा प्राप्त करें, और मैं चाहती हूँ कि उनका ड्रीम हम पूरा करें। जैसा ये भारत चाहते थे अब हम वैसा ही भारत बनाएंगे।